Lord, I pray, even when it's sent by the Holy Spirit, oh God, let her life change, her destiny be transformed. Take her to higher elevation, Lord, higher level, Lord Almighty God. She will do so well in the cricket, Lord, in the Lord, with the batting, Lord, with the bowling, Lord, with the fielding, Lord, everything. She will excel, and Lord, she will show what a great gift asset to you she is to the nation of India, dear Father God Almighty. We bless her, and I pray, dear Father God, you will do something new to her as she never done before. Something new to happen has never happened before, dear Father God. Lord, something new. You are a God of new things, Lord Almighty God. I pray you will do new things in and through our life, Father. Lord, I pray, Lord Almighty, I pray, God, I have a desire that she will set some new record in this kind of World Cup, dear Father. Personally, a new record, Lord Almighty God, for your glory. Hallelujah. She will not play for the record. She will play for that. She will play for the nation. But in doing so, let her set up a record, Lord Almighty God. And I pray, dear Father God, you will make it the head, not the tail, or the top, never at the bottom, in the name of Jesus Christ. She will be always there to be the person ready to take up a challenge and save, Lord Almighty, the team of God. She will always there, Lord, even any challenge situation, she will run with ease. She will handle it, Lord Almighty. Like David handled Goliath with ease, oh God Almighty God. Any Goliath, she will handle easily, dear Father God, and bring down any challenge, Lord, and make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing. Protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord, whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, we bless our daughter, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, amen. प्रेज द लॉर्ड मोर ख्रीष्टीय भाई भणी माने आपण मानकु स्वागत करूची मेसेज न्यूज टीवी रे। वर्तमान आपण माने वीडियो को देखिले जे जेमिमा भौणी को ऊपर हस्त रखी प्रभुंकर दास प्रार्थना करोछंती। आ एही भौणीकर वीडियो मु काली अपलोड करिथिली। निश्चित भाव रे आपण माने देखिथिबे जे एही भौणी टीम इंडिया को विश्व कप फाइनल को नहीं जाइछंती। ता सहित जेतेबेले पुरस्कार उत्सव समय सर्वप्रथमे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एही भौणी धन्यवाद देइथिले। आउ से वीडियो को आपण माने देखियोछंती जे ईश्वर ठारे भरोसा करंती। आउ जेउ कार्य तांके करूछंती, जेउ खेल तांके खेलुछंती, ताहा मध्य से भौणी प्रभु को हस्तरे समर्पण करिथिले। आउ प्रार्थना मध्य करैथिले। प्रभुंकर दास मध्य तांको निमंते प्रार्थना कले। आउ सेही प्रार्थना द्वारा तांके सफलता को पाई पारिले। आउ प्रभु तांको आशीर्वाद कले। हो मोर प्रिय भाई भणी माने, प्रार्थना गोटे एपरि शक्ति अटे जहाँकि आमानक निमंते असंभव लागि थाए ताहा मध्य संभव करि देइ थाए। जेतेबेले आमे ईश्वर गोटे भरोसा विश्वास करी प्रार्थना करिबा, जेमिति कि हितोपदेश तार 3 पर्व 5-6 रे एहिपर लिखा जाए, तुम्बे सर्वांतकरण सहित सदा प्रभुंको ठारे विश्वास करो ओ निज सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही। हमर प्रिय भाई बहन माने, जे सर्वांतकरण सहकारे प्रभुंको ठारे विश्वास करने को वाक्य रे कहा जाए, ता सहित निजर सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही बोली लिखा जाए। निजर बुझिबा अनुसार आमाने कार्य करिबा नाही। आउ 6 पद रे पर लिखा जाए, आपनार सबु गति रे ताहांको स्वीकार करो, तहिरे तुम्भर पथ सबु सरल करिवे। हालेलुया। हमर प्रिय भाई बहन माने, आमाने जहा मध्य कार्य करोछु से समस्त कार्य को जेतेबेले आमने से समस्त कार्य रे जदि आमने ईश्वर को स्वीकार करिबा, परमेश्वर को स्मरण करिबा, आ समस्त कार्य को जदि करिबा, तबे परमेश्वर को आमने प्रथम स्थान देले, परमेश्वर को स्वीकार कले, परमेश्वर समस्त पथ को सरल करिवे। ताहा जेते भी आपण मानक निमंते कठिन हेइ थाउ ना काहेकि, आपण माने चिंता करुथिबे जे एहा मो द्वारा असंभव अटे, किंतु जदि आपण माने ईश्वर को स्मरण करी प्रभु जीशु को स्वीकार करी समस्त कार्य को ईश्वर को निकट रे समर्पण करी प्रभु को ठार साहाय्य मागी जेतेबेले से कार्य को करंती, परमेश्वर से असंभव कार्य को मध्य संभव करि दियंती। आपण मानक निमंते ताहा सरल करि दियंती। हमर प्रिय भाई बहन माने, आम माने देखिलु जे भौणी को पाई केते कष्टकर विषय थिला, किंतु प्रभु
ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ବଳ ପାଇଲେ ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।